दूसरा सर मैं आपके मोबाइल तो वो सिम आपके नाम पर थी, आप उस सिम को अपने साथ उस समय कैरी कर रहे थे. ऑल दीज आर रिलेवेंट फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड इन ट्रायल. फर्स्ट प्लीज टू call for the Yes. close envelope from the trial court. अच्छा आया तो क्लोज एनवेलप आया. और तो नहीं आया. इधर मुझे रिपोर्ट है मीटिंग में हमारा सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया. नहीं था. Sealed envelope submitted before the trial. ट्रायल कोर्ट में सबमिट हुआ है. क्या इन्फॉर्मेशन दी थी ट्रायल कोर्ट को आपने? एनवेलप में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी दिखाएंगे? बताने की जरूरत नहीं, आप हमको दिखा दीजिए. बताया कोर्ट से सीधे श्रीमान के समक्ष आया होगा. देखो कोर्ट से आया क्या वीडियो? कोर्ट से आया है क्या? सील्ड एनवेलप कॉल किया था अपन ने लास्ट ऑर्डर शीट में. देखिए सब टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 6 महीने से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही. लास्ट 6 मंथ से. बोलो. सर ये टावर लोकेशन की बुलवाई थी सर. मैं रात 9 तारीख की रात तक तो मैं आपकी कस्टडी में था और आपने 9 तारीख की रात को 2 बजे मुख्य सूचना का पंचनामा बनाया. ये कहाँ से बुलाई थी? सर ये ट्रायल कोर्ट में ही सर पेश हुआ. मैंने मेरी और पुलिस ऑफिसर्स की जो मुझे ले गए थे उसमें देखें सर जो लोकेशन है मेरी 32 पे ही रात तक है सर. ये सब एविडेंस के बाद में आपको करना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट में कि यू आर पोजेसिंग दैट कैमरा एंड यू आर कैरिंग दैट कैमरा. बिकॉज जो टावर लोकेशन होती है वो आदमी की नहीं होती है, वो कैमरे की होती है. सर कैमरे की नहीं है, मेरे मोबाइल की सर. और दूसरा सर मैं आपके मोबाइल तो वो सिम आपके नाम पर थी, आप उस सिम को अपने साथ उस समय कैरी कर रहे थे. ऑल दीज आर रिलेवेंट फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड इन ट्रायल. सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लॉर्डशिप से कि सर आप थोड़ा सा गौर करें कि मुझे रात को 9 बजे तक कंट्रोल रूम में रखा. तो सर आप जब ट्रायल कोर्ट में मैंने ये ऑब्जेक्शन दिया सर, एक बार ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर देखिए सर. इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट ने भी बात नोटिस करी कि मैं सिंस इंसेप्शन ये चैलेंज कर रहा हूँ मेरी अरेस्ट ही हुई है. उसको ट्रायल कोर्ट ने अप्रिशिएट किया. बट वहां पे न तो आपका कोई नामचा था सर. जो हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब कॉल किया तो आपने सर यहाँ पर मेरा रुखसती पंचनामा बता दिया सर, जो लॉर्डशिप ने लास्ट टाइम पे देखा था सर. सर थोड़ा सा सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई व्यक्ति जिसको रात को 9 बजे के बाद कंट्रोल रूम से छोड़ रहे हैं वो उसी रात को 2 बजे कॉन्ट्राबैंड लेकर के आपके में पहुंच जाते हैं, जबकि 8 तारीख से वो तारीख से लगाकर 9 तारीख तक वो आपकी कस्टडी में था. और ऐसा कोई रोजनामचा सर आपने कोर्ट में पेश किया ना, केस डायरी में लगाया कि आप मुझे ले गए. सर मेरे इंस्ट्रक्शन ये है कि सर भोपाल में जो केस हुआ था उसको लेकर के सर आप मुझे लेकर के चले गए बिना किसी अरेस्ट वारंट के, बिना किसी ऑफेंस. सर मेरे लर्नेड फ्रेंड अगर कॉल कर लें कहना चाहिए सर. विशेष प्रविष्टि 55 नंबर पे उसमें लिखा है कि इस समय सूचना ही आज दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशन में थाना प्रभारी महोदय के आदेशानुसार से सीतामऊ के आरदा शानू शहनवाज खान निवासी नाटक को पूछताछ हेतु सीतामऊ पर तलब किया गया. तो पूछताछ हेतु थाना सीतामऊ घोषित हुआ जिससे विस्तृत पूछताछ किया ना निश्चित किया ना रिपोर्ट. ये सारा No counsel, your defense requires proof और सर इन्वेस्टिगेशन ओवर हो गया सर, which cannot be considered at the stage of. Sir, investigation is also over, sir. Even otherwise, I am behind the bar since 10th of October 20. Yes, this case is of commercial quantity. You need to showcase two things, establish rather, not showcase. One, that you have not committed the offense. Second thing, you will not commit the offense. Lord, your lordship must be referring to section 37. Yes. Lord, may I just respectfully submit, Lord, the Honorable Supreme Court has time and again, Lord, interpreted section 37. Yes. And what is given preference, Lord, is my right to bail over, Lord, the fetters contained under section 37. This is what my respectful submission, Lord. I'll also present the judgment. Lord, the fact remains, Lord, I am on bail, I understand that. What I am showcasing right now before your lordship, Lord, that since 8th of October, I have been agitating that my arrest is illegal. Lord, this is beyond comprehension, Lord, that a common man, even if he's a hardened criminal, Lord, if he's in custody for 2 days, he comes out without any threat and on the same date within just 2-3 hours. Because, Lord, if your lordship may just permit me, Lord, I just refer to the Rodnamcha.
But in the intervening night of 9th and 10th, my lord, because from 2 o'clock in the midnight till 6:30 in the morning, everything was there. But for the purposes of bail, my lord, I am in a position, my lord, to prima facie satisfy your lordship that there are glitches in the prosecution's case. And this benefit, my lord, at least for the purposes of bail, without considering the merits, my lord. I am not asking your lordship, my lord, to touch the merits. But prima facie, my lord, it appears, my lord, that something went wrong, which, my lord, the police tried to cover it. For the purposes of bail, my lord, in the circumstance when the charge sheet is already filed, nothing remains against me for the investigation. Lord, I am entitled for bail, at least, my lord, so that I can, if I am out of jail, I can. Recovery कहाँ से हुई? अभी शाहनवाज से जब्त Yes, A1 ढाबे के पास एवं ढाबे के पास. This is morning 6:30. I come to my home, my lord, at 9 or 10 in the night after having suffered 2 days long custody without any authorization. So what is the tower location? On 10:10. My lord, till 9th night, my lord, I was with the police in the control room. They are admitting that. Yes, my lord. So, my lord, and my lord, What is the tower location in the morning? in this matter, my lord, may I just respectfully submit. Lord, this is the same police station, my lord, if your lordship permits me, my lord. My lord, in one of my own matter, this honorable court has deprecated this practice that whenever it comes to the defense of the accused, the police comes up with a very safer say that the CCTV footage was not working. And this honorable court was pleased to grant me bail. It doesn't relate to my case, but that is the same police station. I just reminded. Now, my lord, no common man, my lord, even if it is he is ardent criminal, comes to home, my lord, late in the night, and my lord would afford to go to 2:30 in the intervening night to a dhaba, the purpose of the transportation of contraband. But prima facie, it appears there is something fishy in the prosecution's case. If your lordship grants me bail, my lord, I'll be abide by every condition imposed. My lord, in fact, my lord, I would respectfully disclose, my lord, that I have 4 similar kind of cases. But I've been granted bail by this honorable court and the trial courts, and I've never misused the liberty. My lord, they have demolished my home, entire home, my lord. My entire family is now compelled to live in a tenanted house, my lord. In the middle of the night, my lord, my family was compelled to throw out in the house. And to spend, my lord, the entire night on the road. And if your lordship may just peruse, my lord, since long I have been raising complaints against the police. And my lord, my wife, my brother on the 8th and 9th itself, my lord, lodged a complaint. And their own superior officer, sub-divisional officer, has taken cognizance and inquiring into the matter. You wish to have an order on My lord, I'll just seek the instructions, my lord. Yes, you must seek the instruction. Yes. Let the court know. Yes, grateful. 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मात्र 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है कंट्रोल रूम से सीतामढ़ी का, और ये कम से कम 5 घंटे आपको सुन लिया You may leave. से नंबर जवान For time for one week, lordship. For time for 1 week. Dr. Manvik. for me Please a lot. First application, non-commercial quantity, 2 लोगों से जब्त हो 7 kg, 0.270 kilograms of poppy stone.